Thank you, everyone. May I request Advocate Riaz Ahmed Khan, President, Bar Association Kargil, to kindly offer khadaks to Deputy Commissioner Shri Shrikant Bala Sahib Suse. May I request Advocate Zarina Bano, panel lawyer, to kindly offer khadaks to Member Secretary, the Ladakh Legal Service Authority, Madam Spalze Sangmo. May I request Shri Sadiq Ali Wazir Munsif Dras to offer khadaks to Principal District and Session Judge Sahib, Mr. Malik Shabir Ahmed. Now may I request Advocate Khadim Hussain, also elected councillor, to offer khadaks to Mr. Wangyal Singh, CGM Kargil. May I request Advocate Nisar Hussain, Legal Aid Defense Counsel, to offer khadaks to Advocate Haji Gulam Murtaza, who is also a panel lawyer. With the permission of the chair, I would like to proceed for today's event. Honorable Justice Mr. Sanjeev Kumar, Judge High Court of J&K and Ladakh, also the Executive Chairman of Ladakh Legal Service Authority. Sir, we would heartily welcome you for today's program. Sir, it is an honor that you're again becoming the Executive Chairman for the Ladakh Legal Service Authority. It is our honor that you are the Executive Chairman of Ladakh Legal Service Authority, and we are very thankful to serve under your chairmanship. Now, I would request Principal District and Session Judge, Mr. Malik Shabir Ahmed, to kindly deliver the welcome address. Honorable Mr. Justice Sanjeev Kumar Shukla, Judge High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Executive Chairman, Ladakh Legal Service Authority. Lordship is connected to us virtually, and very soon he will be visible on the screen. Mr. Shrikant Bala Sahib Suse, Deputy Commissioner, Kargil, and other officers and officials of District Administration. Ms. Supalza Sangmo, Member Secretary, Ladakh Legal Service Authority. Mr. President and members of District Bar Association Kargil, officers of District Police Kargil, participants, ladies and gentlemen, a very good morning and a very warm welcome to all present here today as we gather to observe and celebrate National Legal Services Day today. National Legal Service Day is a day of great significance in our nation's journey towards ensuring justice, equality, and access
to legal aid for every individual, regardless of their background or social status. It was first observed in 1995 when Legal Service Authorities Act 1987 came into force, which aimed at providing free legal aid and services to those who are economically or socially disadvantaged. Today, as we come together, we reflect on the core values of justice, fairness, and equality. Our collective responsibility is to ensure that these principles are not just ideals, but a living reality that reaches every corner of our society. This day also provides an opportunity to recognize the incredible efforts of legal professionals, lawyers, paralegals, and activists who have worked tirelessly to promote legal awareness, offer assistance, and create avenues for legal recourse for the marginalized and underrepresented. Their work continues to break down barriers and pave the way for a just society. As we celebrate this day today, we are extremely honored to have in between us Honorable Mr. Justice Sanjeev Kumar Shukla, Judge High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, and Executive Chairman, Ladakh Legal Service Authority. His Lordship, throughout his career, has reminded everyone that justice must be accessible to all, not a privilege reserved for a few. His Lordship's presence amongst us today will further motivate and inspire us all to strive for this cherished goal. I heartily welcome your Lordship for today's program. On this day, we also honor the memory of pioneer legal professionals who have contributed immensely to the cause of legal aid and continue to inspire us all with their dedication and determination. As we celebrate this day, let us reaffirm our commitment to expanding access to justice for all citizens, strengthening the legal system, and ensuring that everyone can find a voice in the courts of law, no matter their circumstances. Let us make a collective promise to continue building a system of justice that is inclusive, accessible, and fair to every individual in this great country. Thank you all for being a part of this important occasion. Together, let us work towards a world where justice is not just a concept, but a reality for all. Once again, welcome and thank you all. Thank you very much, sir. Indeed, we need to strive so that access of justice is available to all the citizens of India, all the vulnerable citizens of India, which should not be denied the legal aid, the access to justice. Now, I would like to request the NIC people to please play the Nalsa theme song, which has been translated into Purik, our own native language, by a team which consists of Mohammad Abbas Kit, who translated the original Nalsa theme song, which was in Hindi, to Purik, and it is sung by Shri Gulzar Zayan and Shrimati Dechen Chuskit. Please, the Nalsa theme song. अदिल या गो इंसानी फिला अदिल गम को इंसानी फिला अदिल गमाई गामी फिला अदिल तन पोई गामी फिला Fayul Hindustani ka dala sayo Shakhna dili kar pe kadam sang dhala sayo Lag thili malchik nami ka dala sayo Lag thili malchik nami ka dala sayo
Do masol dom ba chara chikto mati nim khansum shahbya khan kun ta mati zgos gola shahbya ume khan kunda shahtobi tere ke yudh khanla shahtobi Bachan punula shahtobi Azlu pula shahtobi Ibayul Hindustani kanadala sayo Demni di mendo hitarpe kanadala sayo Multugi manchikirnami kanadala sayo Multugi manchikirnami kanadala sayo Dikpa nyalba chanpalla rinpa kanuni ruh pe fila yati chuki ve fila nal sa It is indeed beautifully translated by the team. Now I would request Advocate Haji Ghulam Murtaza to kindly deliver his address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's chief guest, Justice Sanjeev Kumar Ji, Judge, Common High Court of J&K in Ladakh, and also Executive Chairman, Ladakh Legal Services Authority, by virtual mode, Honorable Principal District and Session Judge Kargil, and Chairman District Legal Services Authority Kargil, Malik Shabir Ahmad Saab, Honorable Principal District and Session Judge, and Member Secretary, Madam Palja Sangmoji, respected Deputy Commissioner Kargil, Honorable CJM Kargil Bungyal Saab, Honorable Chimet Saab CJM, and also Secretary DLSA Kargil, and Tahsildar Saab and representative of SSP Saab, and Jema Sidras Sadiq Saab, and my colleague bar members and August participants, and also coordinator NCC and MSS, Asha and Anganwadi workers, NCC in charge, NCC students, and everybody present here. आप सबको मैं इस फंक्शन में इस दिन पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। डाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह दिन जो यहाँ आज मना रहे हैं, और ये जो तक सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में मना रहे हैं, और इस लीगल सर्विसेज की फंक्शंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स एंड अप टू दी लीगल सर्विसेज कमेटी तक, जो एक ब्लॉक लेवल पे होती है, तहसील लेवल पे, यानी एक बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। स्पेशली हमारे जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल वेरी डाउन ट्रॉडन है, इन लोगों को सर्विस देने में, इन लोगों को मुफ्त कानूनी इमदाद देने में हमारी यानी ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है बिल्कुल बहुत ही आगे है। और आजकल में जब से ये एक्ट वजूद में आया है, बहुत अच्छी सर्विस मिल रहा है।
ना कि सिर्फ गरीबों के लिए, बल्कि इस लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे, स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में, हाई स्कूल्स में स्टूडेंट्स को लीगल अवेयरनेस, लीगल नॉलेज देने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ काम चल रहा है, और स्पेशली हमारे सेक्रेटरी डालसा, हमारे अचीमियत साहब ने तो एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें एडवोकेट्स को इन्वॉल्व करके, यानी डिफरेंट इवेंट्स के टाइम पे डिफरेंट टॉपिक्स पे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, यानी बच्चों को लीगल अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। वेरी रिसेंटली हमने यहाँ का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ यूरबल तक में, हमने वहाँ फंक्शन किया, और ड्रग एब्यूज़ पे वहाँ एडवोकेट्स ने बहुत अच्छा वहाँ लीगल अवेयरनेस दिया, और साथ ही साथ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत अच्छी यानी खिदमत जो है वो चल रहा है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने भी आपको एड्रेस करना है, तो मुझे बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मैं आप सबको बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब ने मिल के हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, Advocate Murtaza Saab. Now I would request Madam Spalda Sangmo, Member Secretary, the Ladakh Legal Service Authority, to kindly address the gathering. With the permission of chair, I will just speak in Ladakhi. Teninge samarak diring ngata ijak puma khakchan ijak shingdeme jak shigino. Tefia nge ngata Ladakh senanga engaged sama detail ngam puha gochugin. Tene diring tsukspe ushkyong Honorable Justice Sanjeev Kumar kao ngata tene virtually daksa gyokspa ngata ngam po join zat cheseno kao khoni kashkutche jot mishkut mathup. Tena tsuksla tene ngata diring ka juxteot kane dompo sachan tene DC sab Bala Saib Susi sab tena tsosla tene ngara azuko thopa tene Shabir Ahmad Malik Principal District and Session Judge sab tene Wangyal sab Chief Judicial Magistrate tena tsosla tene ka juxteot kane ngata dais ka juxte tene Ghulam Murtaza sab tena tsosla Sadiq Saib ngata Munsif Daras tene ka juxteot kane tene President ngata Bar Association President Riaz Ahmad Saab, tena tsosla senior member Manzoor Saab, tene Khadim Saab, Tasildar Saab, yang ika juxteot kane SSP Saab, tene school kansong ne shkot kane tene Loptuk Langyas, tena tsosla tene NCC, tene Thusbi Langyas, tene ngata school soso ne shkot kane Gergan tene ika incharge shkot kan Langyas, Anganwadi tene worker, Asha worker, tene ika tsam shingata government official juxteot na, tena tsosla Skaldang Saab, tene superintendent engineer Saab, tena tsosla tsamshik dompo ika thusa zateot tena tsosla mimang thusa zateot changma lange jule assalamu alaikum good morning juin jule tene diri jak por sachan khakchan che inozer na gato teve fia khakchan no ngatang azu independent song telting ne lo phalanji ngatang yalba chan gula chang program met ba nyam shung azu gula matho ba court azu potho ba met kya hale court la junan chi jono access to justice for all कानून ने आजुको थोबरी थोप तांगवांग संगमा डांडा थोप गोजुआनो ते फिए तेने आर्टिकल 39A गुमाजुना ngata sartim sena khwa zatya tenna ve nangshin tene supreme court enanga 1995 में नंगा तेने लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को आजुक जाते सिर्फ प्रो बोनो लॉयर आजुक जात क्या कागुन फ्री जात का न्योत तेल तिंग ने तेने ngata 78 ना लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को तेने पार्लियामेंट पास जाते ते काने आवा तेने ngata इका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज एन सुगा जात क्या तेना वेते का वे तेने उशकोंग बोखेतना सुप्रीम कोर्ट है तेने पैटर्न इन चीफ जस्टिस बोखेतना पैटर्न इन चीफ जुक्स्तानो तेना चुसला तेने सीनियर मोस्ट बो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जुक्स्तानो का ngati Kargil angye tup chik फेप्स दिन पिन खोन ngata जस्टिस खाना फेप्स दे इका ngata yang program सच्चान जिक जातेन पिन तेना चुसला ngata तेने तेस दिन बोने स्टेट एकाले माना स्टेट ला तेने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एन हर एक स्टेट एन आयो क्या हाले तेने लद्दाख ngata यूटी ग्रुप पाने फाला यूटी माग्यूर ngal la ngata जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी आजु गनावत क्या तेने लद्दाख पजु ग्रुप पाने ngata लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जनो तते वे फांतोस पुचियो क्या सना बजट संगमा डायरेक्ट ngata लेबानो
ka gyu te ngata public a chik ta kanun score la pura hago salano hale teni ngispa ketena ka gun la shkor samete gun la wakil salano जैसे दक्षा ngata legal aid defense council ngata I ka jukste hoteno ka gune criminal cases chadna hale te benanga suji ganga ekdam ngata ngala jikshano banga kanun wa yu ngana ngam poazuk song hatsa jik song tanga court la cha jikse rak penish korshe merak samkanang mangpo yo anok ba teo yo na ngam po ekdam tanga ta samchor nei legal aid ngata defense council yo ngata khone ka direct chen teo ngata chon la no hale tenna chusla ngata civil case shko da ngata penal lawyer yoteno kao gyute ngata ekdam penal lawyer wakil tano hale te fe ngalla chi son kar juna mane chupo gun mane I asu kanune program bo sirf I ladakh chikpo asu ngata jaga chunji kamano I kane ngata daily problem shko daras na ina facility jot kya Bombay jiga ya gyagare का जगह जिगा छाना katong ये फैसिलिटी सब के लिए बराबर है ले और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ज्यादातर अभी आप बोल रहे हैं एज पर द एक्ट जो है अराउंड 80% जो है इसमें कवर हो जाते तो इसमें जो है न्यालबाचान योडो यांगता शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट योडो पोमो योडो यांगता ठुगु योडो यांगता जैसे जुगिस थोकने शकोनबा योडो सुज योदना ई छंगमा कवर शकोदानो सीनियर सिटीजन का घनगोन जुस्ते ते उन कवर शकोदानो तेना वे अकॉर्डिंग ngata jaga jaga legal aid clinic pesteno diri jaga ngata justice sahab ngata na nyampo join jate ngata legal aid clinic e inaugurate dejak nani justice khana sahab jane promise choskane nangjin du nazuk jache zeno sumbo diri inaugurate jache zeno tenna chusla justice khana sahab jane kane ngata administration la azu advisor sahab request chana tene ta mobile van go so ka jaga jaga mobile van gyute khetena migula programa chenze te changma facility sang salte no ale teve fe ngata ibe program bo ma khachane oteno I jak pokurang har साल ketena 9 November lersiano hale 9 November la I logo te fersiano mimans la te o itu skulin ki nei ngata suang hangs te met kya ngata I azuge desh citizen in pane ngata changma kanuna nang barabar hak yo kya अगर मैं एफर्ट नहीं कर सकते तो मेरे लिए ये सब फैसिलिटी से देते I वो खेतना जगह जगह ngata फैला जा चुके से नो तेना चोसला dasangata I ka even mane azuge penal lawyer nang legal aid defense council nang tene wakil sangma ladas la khetana sam shingya nang khone izam corporate za tu ke shigleb na katong gyokspa thak chot za ches teo za ches hale tena choslangal langata zeno court kachre na mane ngata compassion zin dul go su zeno daksa inna kanun betet khetana ngata alternate dispute resolution zeno kya pa tebe according lok adalat bar bar chano hale lok adalat na koshish chono party ngiska nyampo duks de Sangma thatpo nang yam pochen niska hale ngatang mi in pane falla jingmo chanok mi in pane falla zerzer chanok mi in pane falla ngata chig nang chiga pariga thun mi thun ches parigal demo chaches komina minda chatte ngati mi che ka hale cha nang yam po te sangma I program sangma borte loga dala de nale banang yam po niska tene thatpo nang yam po los de chaches hale thik ra ngaja problem sung in nang I ka ngaja nang niska thatka ne nang jin I ka thakchat sung jete azuk chaches la tene gyokspa Pene mangpo kharcha ma cha gyokspa fesla chaches te changme fe I program sangma bora zateno tenna chosla ngata mediator juksto kya wakil ka onani ngata mediator jipchu jiga ladak legal service authority gurpane training salten tene mediator ka chik ngeja na yang thatka ne jikhale thik ranga I jung ne I bi wonga borgo shirak mediator la borte tene ngeja rang azuka gun la jingmo yotoing iska nyampo borte spera salte tha azuko thakchat zaches tene ngiske spera udun la lep chukches Chin nang I circa zangma ngata samaj na ngatang demo choste skitpo choste dugyan chesale ngata satim se ngata constitution according ngata I sos hak mangpe gyote no pa teo nang nyampo tene ngata duty ang demo achen te changma circa demo jig even ayote no tene tenna chosla diring eja student boches anganwali worker asha worker tenna choslena nambardar mangpo jig juste lo hale tenna chosla ngata code staff indo ya PLB changma gyute कोशिश पो यू यू हम यहाँ से ये लेके जाएंगे कि ये मैसेज जगह जगह गाँव हर एक जगह हम पहुंचाएंगे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट काफी है हाले पहले हम जब स्टूडेंट होते थे तब जब प्रॉब्लम होता था हमें पता नहीं होते थे कि कहाँ जाना है आज आप इंडिया के कहीं भी कोने में जाएंगे अगर लीगली कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं अब यहाँ पे बैठ के जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप लीगल एड का फैसिलिटीज लेके आप केस फाइल कर सकते हैं इसी तरह हाई कोर्ट में जो है डायरेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो
रिसेंटली हमने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लिए एक लीगल एड के लिए भेजा। इसलिए ये सब फैसिलिटीज जो है हम सब के लिए है, समाज के लिए है, हर एक लोगों को जो है कानून का जो फायदा जो है बराबरी से मिले, इसलिए है। तो ये मांग पे मिजू संगमाला जुले तुझे छे। थैंक यू। थैंक यू मैडम स्पाल्जिस्ले। डालसा कारगिल का पूरा कोशिश रहेगा कि दूर दराज इलाके डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी हैं वहाँ तक पूरा लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने का ये हमारा कोशिश रहेगा। रिसेंटली डालसा कारगिल ने 8 पैरालीगल वॉलंटियर्स रिक्रूट किया, एंगेज किया है, जहाँ पे हमने 3 नए लीगल एड क्लिनिक्स भी खोले हैं। और हमारा कोशिश रहेगा कमिंग फ्यूचर में कारगिल के जितने भी ब्लॉक्स हैं हर ब्लॉक्स में एक लीगल एड क्लिनिक खोलने का ये हमारा कोशिश रहेगा। With that, now I would request Deputy Commissioner Kargil, Mr. Bala Sahab Suse, to kindly deliver his address. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लीगल सर्विस डे के मौके पे चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव कुमार, जज हाई कोर्ट ऑफ जे&के एंड लद्दाख एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी, चेयरमैन डालसा कारगिल श्री मलिक शब्बीर अहमद साहब, मैम स्पाल्जे सांगमो, मेंबर सेक्रेटरी लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे सीजीएम वांगल साहब और मंच पे उपस्थित हाजी गुलाम मुर्तजा साहब, सेक्रेटरी डालसा चेमित साहब, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल एडवोकेट्स, हमारे सारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आप सबको जुले सलाम, नमस्ते। सबसे पहले मैं आज लीगल सर्विस डे के मौके पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि मेरे से पहले जितने भी गेस्ट थे उन्होंने भी बताया कि आज के दिन का इम्पोर्टेंस क्या है। आज ही के दिन 9 नवंबर 1995 को लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। और जैसे भी सबने बताया कि इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे वीकर सेक्शंस या जो हमारे दूर दराज के इलाके में लोग रहते हैं वहाँ तक हम कैसे लीगल एड पहुँचाए, जस्टिस पहुँचाए। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इसमें एक मेंबर उसमें इसलिए है कि जितने भी अपार्ट फ्रॉम लीगल एड एंड जो हम जस्टिस की बात करते हैं थ्रू कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हो उनको अपने राइट्स कैसे मिले। उसमें बेसिक चीज़ें आती है कि साफ पानी कैसे उपलब्ध हो, रोड की कनेक्टिविटी कैसे हो, उसको मोबाइल कनेक्टिविटी हम कैसे दिलाएं, या एजुकेशन हेल्थ की सुविधा हम कैसे पहुंचाएं। मैं समझता हूँ ये भी एक सिटीजन एज ए सिटीजन के राइट्स होते हैं। और एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे राइट्स हमारे सिटीजन्स को सीमलेसली मिले। और इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो भी रोल होता है उसको बड़ी तरीके से उसको अच्छी तरीके से निभा रहा है। जैसे जल जीवन मिशन की हम बात करें तो लगभग हमने 90% से ज़्यादा जो रूरल हमारे हाउस होल्ड है वहाँ तक साफ पानी की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है। उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी बात करें तो मैं समझता हूँ कुछ 2-3 गांव छोड़े तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हमारी रोड कनेक्टिविटी मैं समझता हूँ कि पहुँच गई है। अगर 4G सैचुरेशन की बात करें तो पूरे जोर शोर से इस साल हमारा टारगेट है कि हम सारे हमारे जो जितने भी विलेजेस है वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी हम कैसे प्रोवाइड करें। हेल्थ डिपार्टमेंट में बात करें तो हमारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स है उनका रिसोर्सेस की और रिसोर्सेस इंस्ट्रूमेंट जो भी इक्विपमेंट हो या फिर हमारे ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वहाँ तक हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हाल ही आपने न्यू डिस्ट्रिक्ट का भी अनाउंसमेंट हुआ, वो भी एक जस्टिस या जो हमारे सिटीजन्स को फैसिलिटीज डोर स्टेप पे पहुंचाने का एक इम्पोर्टेंट कदम है, ये मैं मानता हूँ। और जैसे मैडम ने भी बताया कि जस्टिस खन्ना साहब का यहाँ पे जब इवेंट हुआ था तो जो यहाँ से डिमांड आई थी कि हमें मोबाइल वैन की ज़रूरत है, तो उसमें भी इमिडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं यही एश्योरेंस देना चाहूँगी जो भी
हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगा, ज़रूर हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो या फंड्स के बारे में हो, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प, सो दैट हम जो एक्ट में बेसिक ऑब्जेक्टिव है उस तक हम पहुंच पाए। तो मैं फिर से डलसा सेक्रेटरी, चेयरमैन, सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया। और फिर मैं एक बार लीगल सर्विस डे पे सबको, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Now we'll start. We'll show a few clippings of the activities that has been undertaken by DLSA Kargil.
Thank you. These were the few glimpses of the activities undertaken by DLSA Kargil in terms of organizing Lok Adalats, legal awareness camps, door-to-door campaigning at the various village level and even in far-flung areas. Now it is time to felicitate the panel lawyers and PLVs, those who have put in their hard work in reaching our target of access to justice, our main aim, which is providing free legal aid to the needful people. Now I would request Honorable Deputy Commissioner, Mr. Bala Saab Suse, to kindly felicitate Advocate Haji Murtaza, who is a panel lawyer, by offering Khadaks and certificate of appreciation. Yeah, Banu. May I now request Srimati Spalda Sangmo, Member Secretary, Ladakh Legal Service Authority, to kindly felicitate Advocate Kacho Manzoor Khan, panel lawyer, by offering Khadaks and certificate of appreciation. May I now request Shri Malik Shabir Ahmed, Principal District and Session Judge Kargil, to kindly felicitate Advocate Zarina Bano, panel lawyer, who has been panel lawyer with us for past 6 years, for her hard work and providing legal aid to the needful people. May I now request Shri Wangyal Singh, CGM Kargil, to kindly felicitate Advocate Kanis Fatima, panel lawyer, by offering Khadaks and certificate of appreciation. May I now please request once again Srimati Spalda Sangmo, Member Secretary, the Ladakh Legal Service Authority, to kindly felicitate our paralegal volunteer, Ms. Chetan Lamo, the one of the most promising PLVs we have in DLSA Kargil. Lastly, I would request all the dignitaries on the dais to please come forward and give away the check of legal assistance. Oh, ole, ole, acha. May I now please request Kacho Manzoor Ali, Advocate Kacho Manzoor Ali, to speak few words as a panel lawyer. He's been a senior lawyer within the bar Kargil and has been panel lawyer for a long time. Thank you very much, Vardi Secretary Saab.
आज पे डाइस पे आए जनाब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शब्बीर मलिक साहब, ऑनरेबल सेक्रेटरी ललसा मैम पल्जा जामो, वर्दी डिप्टी कमिश्नर, ऑनरेबल CGM, ऑनरेबल JMSC सांको, सीनियर एडवोकेट हाजी मुर्तज़ा साहब, एडिशनल SP करगिल, बार प्रेसिडेंट रियाज साहब, खादिम साहब, मेरे कुलीग बार मेंबर्स, यहाँ पे आए आशा वर्कर्स, अंगनवाड़ी वर्कर्स, NCC स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान खुसूसी जो चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ललसा, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, सीनियर मोस्ट जज कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, जो यहाँ पे आना था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो मैं कुछ इतना प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मुझे स्पीच नहीं देना था। ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब की हुक्म हुआ कि थोड़ा सा दे दें, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, नलसा क्या है, ललसा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को अपने लद्दाखी लैंग्वेज में विद परमिशन ऑफ द चेयर कुछ बोलना चाहता हूँ। दी ngata di ka jama che maksad pudiring लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कानून चीजों सगज मौज ना 1995 अनुदी कानून पर लागू छाना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट दी डेव मनाई बात शुरू सो 9 नवंबर ला दी कानून पर चिया चिया जरूरी सो चिया चो जरूरी सो। सबसे पहला क्वेश्चन पर चिया ngata दियो चो सर मैंने चिया जमाना कोर्ट इसनन ला मेन ला स्वेपिन कोर्ट यहाँ दुख से सिर्फ फैसला तांचा सजा तांचा जिंगिर मांगियोत क्रिमिनल्स या सुस खोबासियोत नदों ला सजा तांचे लास्वेपिन, लेकिन कोर्ट ला दी सोशल लास पे बेफिए आगे यों मरगोस चीज बना मैडम पल्स आमोज मोज चीज बना सान ला दी जस्टिस सिस्टम पर सिर्फ फिक्पो मिया मैंने दी खो बायन मैन चीज बना गरीब उन्हीं ना खुआ वकील महंगा सोंग गचुगा छचिन ची बसे दरखास्त ब्रिचिन कोर्ट यांची बसे छचिन गा वकील पुचोर गोशिन चाम पतेक मचाना दी एफर्ट्स पर शुरू बासों चीज बंगाते से एक सांस्थिक अथॉरिटी फेयर गया ताकि गरीब तबके म्यूल लंग बराबर हक पो गा छिम्यूल लंगा हक पो थोबत फिक्पोन ला दिया चोला गरीब म्यूल लंग ngata दी चोला दी खो थोब खोआ थोबर गोशिन जरबाने दी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पो कानून पो क्यों मसो दे कानून पियानो मिसाल गरीब तबका सेक्रेटरी लालसा मैम मोस चेज दिया नो को ST उमर गोशन बोमो उमर गोशन वीकर सेक्शन दोना छिमी योजना दी कानूनी मदद पियानो खुआ फ्री वकील फ्री लीगल एड पूरा कानून इस मदद बसे खुए गा केस पो गा छिपोची लड़ाई बहुत ध्यान सोच पो खुए केस पो लड़ाई बसे कोर्ट यानु खुआ खुआ फैसला सही थोप चुचा खुए हक यन थोप चुपिया दी कानून पोचोस दे मत देर के अपना चीज की दी स्कीम पो बड़ाई चेन सो दी अथॉरिटी देर गेस ठीक इंसान ला पैनल लॉयर्स या एमेकस क्यूरे या प्रो बोनो छो छो वकील उन्हें गाचा प्रो बोनो फ्री गरीब उन्हें गाचा लाजबेत देर के अपना कोर्ट इज एमेकस क्यूरे अपॉइंट बात पिन गा गरीब चीज या वकील ची मार्केट ना चिक चिक गलार वकील चिक एमेकस क्यूरे कोर्ट इज अपॉइंट बस दे वकील मार्केट खनी केस वो दे थ्रू लड़ाई बात होती ये अपना देश सिस्टम पर ख़त्म बस दस्तन डिफेंस लॉयर सिस्टम यानी कोर्ट गवर्नमेंट इज खुरी खिलाफ केस बा ए मियो पेने तांचा दे वकील चा अपॉइंट बस डिफेंस लॉयर्स जेर दस्तन अपॉइंट बस हर डिस्ट्रिक्ट का हर कोई हाई कोर्ट यानो हर सुप्रीम कोर्ट सबका दी सिस्टम पर पूरा डूल नहीं सुप्रीम कोर्ट यानो दियो अजरबात नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी देखें स्टेट यानो सलसा स्टेट लीगल अथॉरिटी ngata util dan mana ngati dan naya ko chana ngati do lalsa ladakh legal service authority ladakh legal service authority anu yonsen district legal service authority na tehsil legal service authority doni ka ngati di ka district legal service authority chairman principal session in district and session judge juksin dona secretary chimet sahab juksin the lalse secretary madam palza zammo juksin दी मेन मकसद पदी स्कीमी दी सर्विस सी मकसद में गरीब मी सगा
फ्री इमदाद तांचस खुआ फ्री लीगल एड थोप फ्री वकील अपॉइंट बचा ताकि खुआ दी नया नु शामिल सौ से खुआ जस्टिस जो खुआ इंसाफ थोप तुक जरूरी पिया चाना बहुत से केसेस that's also mon der gap nangati Ladakh victim compensation scheme दसन दो लागू गा बोमोची खिलाफ ज्यादती छो खोई खिलाफ खो चाहे केस पो 250 27 खोज दिया नु दरखास्त से दे मुलजिम पर सजा थोप या मा थोप खवा दरखास्त दे स्कीम ये सब का खवा दें कंपनसेशन बंग थोप मेंशन दी चोकसिन दिरी मेन मकसद पो दी के से खवा जनता मोल भी मकसद पम दी लीगल सर्विस अथॉरिटी बेनिफिट पो नचस दिके नंबरदार जमा बास आंगनवाड़ी खोए मैसेज पो लेप चुचा दी चोक स्कीम ची यो 300 छाना हर ब्लॉक लेवल का दक्षन जैसे लीगल क्लिनिक लीगल कहती लीगल फर्स्ट लीगल एड यूं दे अस्पताल यूं में था चुक सुबिक तांचा शिक गोवा जर्मोन आसमान क्यों चाशिक मेडिकल पोनिस लीगल एड सिस्टम कोई मेडिकल एड सेंटर होता है दिया सोचला कोटी तरफ ना लीगल क्लिनिक सिस्टम हर ब्लॉक लेवल का चिक्चिया दरखास्त इस बिचा से तहसीलदार हैं सो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट चिल्दन में सो क्विक रेजिडेंस सर्टिफिकेट चिल्दन में दरखास्त बिखन थोप में देखा चिक सोच है ना दी लीगल एड टी मदद के यंता दे पैनल पीएलवी पेरा लीगल वारंटर दे के जुक सोचन क्विक ना दरखास्त भी से तहसीलदार लीला खेर बेंचा ब्लॉग या ना स्कीम ची क्विक माथोप ना दो चल बेंचा एसडीएम लेवल की दरखास्त भी से तांचा दे अलावा केस छना कोई केस पर रेफर बचा दो निका पैनल लॉयर जैसे तीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पी का गाज सूचिया मदर गोशे होतना कोर्ट इस दरखास्त ना बची बोमे गरीब ची दुख तुक एसटी दुख तुक दो ना कोई इनकम ची कम दुख तुक दो ने छिमी दुख तुक कोई दी पहला लीगल रिगरमेंट थ्रू या डायरेक्ट खोरांग से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का दरखास्त ना खो फ्री पैनल लॉयर आता चेन या फॉर एग्जांपल चिकची खिलाफ क्रिमिनल केस जो खो वकील जो गुंजाइश मिशाना का तो खो डिफेंस काउंसिल सिस्टम पे आना खो वकील तंग से कोई केस पर लड़ाई बचा चाना मेन मकसद पन की गा मिचियानुक दी इंसाफ मथोबा सो मिलुस सगा इंसाफ को थोप तुक बराबरी का थोप तुक बराबर हिस्से का थोप तुक ताकि हर चीज़ दी लीगल सिस्टम पे इंसाफ को खोआ पूरा गार सकपा छारगोज ना चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के छारगोज ना स्टेट लेवल का हाई कोर्ट चा छारगोज ना सुप्रीम कोर्ट ची गल या गा इंडिया ची गा जगह ची जुडिशियल सिस्टम चानुक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या स्टेट जुडिशरी छारगोज ना हर जगह का दी सिस्टम पो अवेलेबल होते हैं दे फेंगाची मेन मैसेज पुदी मेन मकसद पुदी पिन यंतंग दी स्कीम ही फायदा नेने दिउ चीन जरे फर्द को बस से यंतंग गमा दी फायदा नेंचा दोना दी का दक्षन ऑलरेडी संगमास स्पीच पो मोल्स दिसो स्कीम यो यंता दी फैसिलिटी यो दे फायदा नेंचा दोना अच्छी मैसेज पो घर घर गाँव यंता नंबरदार उनस्क्यो तना मोल्सा दिसो शिदुक पैनल लॉयर होते इन दिसोला फ्री वकील थो बत्सुक दिसोला विक्टिम कंपनसेशन स्कीम दिसोला दिसो सो ना पेने दे फिया खो थो बत स्कीम फिया खो कंपनसेशन थो बत्सुक दोन गाँव यंतेस ऑलरेडी फायदा नेंचा बाकी मोहम्मद जरूर देंती थैंक यू बाकी यंग स्पेरा चिक चिक दू जरूरी कि फॉर एग्जांपल दक्षन अच्छी एक्सपीरियंस ये सब के जरिए हर गाँव यंग दक्षन गति जुडिशियल सिस्टम जब से दी का गति तक एक परमानेंट दक्षन एक सेक्रेटरी सब जज लेवल सीजीएम लेवल इफिया दी कयों से को इस ऑलरेडी हर कैलेंडर फिक्स बस हर जगह फॉर एग्जांपल स्कूल या स्टूडेंट इफिया स्टूडेंट मोहम्मद स्टूडेंट इफिया को दी कानून चीची यों बंदा फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन योत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट योत दोनी बारियानु गाचा खेरे एक्सपर्ट्स खेरे हर जगह हर स्कूल उनका दे बारियानु दो थोप चुपन दोना अक्सर डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना पुलिस अथॉरिटी कॉर्पोरेशन में पा दिलासपुर से मेन जो स्कीम गवर्नमेंट स्कीम को थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पुलिस अथॉरिटीज होते ना गाच स्कीम ची फॉर एग्जांपल यंता में थोप तो फॉर एग्जांपल कोई दक्षिण डीसी साहब जल जीवन मिशन गाचा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल दिया खचिए प्रॉब्लम होनु जल जीवन स्कीम को गाची ठीक बसे डुलबा में खचिए गाचा माथो नी तो डिस्कनेक्ट बस जिनची दिसो दरखास्त दी दरखास्त सुन गाचस फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंबर्स ना दियो जुडिशियल लेवल का हेल्प से जुडिशियल इंटरफेरेंस बसे दी स्कीम को यंता सब थोप चुचा चीज हमने मी खची का जो है ना ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम को खचिए पता ही हूँ आंगनवाड़ी चीची सिस्टम यो सोशल या सोशल वेलफेयर चीची स्कीम यो फिशरीज पिची स्कीम योत या एजुकेशन पिची स्कीम योत दोन
ठीक बस से माथो बना अच्छे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व बस से दरखास्त से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ ना कोई को रिस्पांस पर क्यों से दो मसला हल बे कोशिश बा छाना दिस उस प्रॉब्लम योत ना फॉर एग्जांपल कोर्ट से मसला में स्कीमी मसले हैं चिचे हक से बात होप ने अपना दो अच्छे फुली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तहत लाल से इंस्ट्रक्शन बेसिस का यंती दी स्कीम उन्हें अच्छे पूरा थोप चुपी कोशिश बचिन दी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दोना ngati daksan सादिक अली वजीर साहब को केसीएस जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पर ngati सगत तरफ ने को कांग्रेस जेद को दक्सन दराज मुंसिफ अपॉइंट बस करगिल तरफ बाकी यंग ज़्यादातर स्कीम जैसे कि सोशल वेलफेयर राशन कार्ड मसला या दी हेल्थ इश्यूज हेल्थी मेडिकल कार्ड पुथो भी पे काफ़ी इश्यूज दो का तो सूची का प्रॉब्लम ही होता नंबरदार यंता सा मोलिन ngची पैरा लीगल वेलेंटर्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंट बखन पर हर क्लिनिक के सोच से कौन है वो खो बस से या ngची पैरा लीगल वेलेंटर शख्सों से दे मथो बेतकन हेल्थ कार्ड मथो बेतकन जॉब कार्ड मथो बेतकन दोन गांव में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दो पूरा काम इन दो यंती लास्ट सुबह तक दो ना दक्सन डीसी साहब इस्मोल्स की मोबाइल वेन चीज़ में आती इलाका जो से फर फुलंग दक्सन हर एरिया उतना 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर का गाँव नहीं उत्पन्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज देजा ऑनरेबल चेयरमैन लालसा दिया यों सोचना आते सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना साहब दी किसके उतना रुकिया शिबस्किन मोबाइल वाइन गोशा दो दक्सन डीसी साहब इस्मोल की आचस बहुत जल्दी मोबाइल वेन क्यों से मोबाइल जैसे आती एटीएम मोबाइल होते घर ओसा एटीएम यारे पेनी फिंग से खड़ा बस दिया सोचला दी थ्रू आचस पैनल लीगल लॉयर्स ने होचा एक्सपर्ट्स होचा पेलवी जैसे तो मोबाइल में तो हर गाँव चाहे फरफुलंग एरियंस मन गति फॉर एग्जांपल दक्षिण संस्कार से रुक सापी से रुक या आउटस्केट मना चिकतानी फरफुलंग या बहुत खरबू दे सब घर दराज सी अप टू मुश्कू और सकपा गचस दी स्कीमुन लेबत भी कोशिश बेनियोत दोना यंतंग संगमा दी डल से खुए का दी का स्क्योत भी बहुत बहुत शुक्रिया यंतस पेशेंट दोना गची पेशेंट ली दी उन गाँव में यंस भी बहुत बहुत शुक्रिया सिर्फ मैसेज पो दिरी जगह मैसेज पो गाँव लेप कुछ पे यंतस कोशिश बचा शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच एडवोकेट काचू मंजूर अली खान, थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश करूंगा पीएलवी छ्यांग लामो जो हमारे साथ है और वो अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि द रोल ऑफ पीएलवी का काम क्या होता है। मिस छ्यांग लामो। या जुले छंगमाला अस्सलाम वालेकुम जुले तो मैं एक पैरालीगल वॉलंटियर हूँ। तो हम अपना यहाँ पे मेरे तरह और भी हमारे बहुत साथियाँ हैं जो ऐसा पैरालीगल वॉलंटियर अपने अपने ब्लॉक में काम करते हैं। तो हम अपना काम कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगी। हम हर एक डोर टू डोर अवेयरनेस देते हैं जो भी स्कीम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को जो बहुत अनएजुकेटेड लोग होते हैं बहुत सारे हमारे गांव में, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कैसे हम मतलब उस स्कीम का फ़ायदा लें। जैसे कि हम मैक्सिमम जो है हम लोग जिस चीज़ पे काम करते हैं वो ओल्ड एज पेंशन। अभी तक मैंने अपने जो काम में ज़्यादातर जो काम किया है वो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन्स वगैरह और जो लेबर कार्ड्स हमारे साइट में बहुत सारे लेबर्स थे जिनको लेबर कार्ड का बेनिफिट का कुछ भी पता नहीं था। तो हम साइट पे जाते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं कैसे करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे, हमें ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ आप खुद लोग करिए। तो हमने इस तरह बहुत सारे लेबर्स का अपने जो साइट पे है हमारे एरिया में बहुत सारों का मतलब मैक्सिमम 200 से 300 लेबर्स का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, खुद लेके आए खुद सारा कुछ, क्योंकि मैं जो हूँ बटालिक से हूँ तो हमारा तहसील सब कुछ ब्लॉक वगैरह यही पे करगिल में ही पड़ता है। तो इस तरह से और बहुत सारों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, तो उनका एप्लीकेशन भी लिख के देते हैं। कोई आते बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, कोई जो
वही पेंशन्स वगैरह उनके एप्लीकेशन जो लिखना होता है सब कुछ फॉर्म जो है हम खुद फिल करके देते हैं। और जिनको जाना मतलब उनको हमें प्रॉब्लम पड़ती है कि हम जा नहीं पाते, हम कैसे करेंगे, पूरे प्रोसीजर को हम कैसे करें, तो वो सब नहीं पता होता है उन लोगों को। तो हम खुद उनसे फॉर्म फिल करके हम खुद ही सबमिट करके आते हैं ऑफिस में सब कुछ। और जितने भी बहुत सारे स्कीम्स है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, और भी बहुत सारे स्कीम्स है जिस पे हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chatanamo. Sorry. अब हम we'll just wait for 2 minutes, Lordship, Honorable Mr. Justice संजीव कुमार हमारे से बस 1 मिनट में अभी ट्राई कर रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा वो प्रायर ऑक्यूपाइड थे, इसलिए इसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। बस हम अभी उनसे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। We'll just wait for 1 minute. अदलिया गोई सारी फिला अदल हम गोई सारी फिला अदल त्यामाई गामी फिला अदल तन पोई गामी फिला Ipayul Hindustani Kanadala Sayo Shakhna Dili Karpeka Sanadala Sayo Lakhtili Malchik Nami Kanadala Sayo Lakhtili Malchik Nami Kanadala Sayo Do masol dom ba chada chikto ngati khansum shahbya khan kun ta ngati zgos gola shahbya ume me khan kunda shahtobi तेरे के युद्ध खल्ला शख्तोबी बचन पुनुला शख्तोबी अजलो पुला शख्तोबी Ibayul Hindustani Kanadala Sayo Diyangidi mendo hitarpe Kanadala Sayo Multugi malchikir nami Kanadala Sayo Multugi malchikir nami Kanadala Sayo Dikpa nyalba chanpalla rinpa kanuni ruh pe fila yati chuke be fila nal sa
अदलिया गो इंसानी फिला अदल हम गो इंसानी फिला अदल yang main kami फिला अदल तन पोई kami फिला Ipayul Hindustani Kanadala Sayo Shakhna Dili Karpeka Sangadala Sayo Lakhtili Malchiknami Kanadala Sayo Lakhtili Malchiknami Kanadala Sayo Do masol dom ba charas chikto mati khansum shahbya khan kun ta mati zgos gola shahbya umen me khan kunda shahtobi तेरे के युद्ध कल्ला शख्तोरी बचन पुनला शख्तोरी अजलो पुला शख्तोरी Ibayul Hindustani Kanadala Sayo Demni di mendo gitarpe Kanadala Sayo Multugi Malchikirnami Kanadala Sayo Multugi Malchikirnami Kanadala Sayo Dikpa nyalbatan Allah rinpa kanuni ruh pe हमारे बीच में दिचन छुस्कित है जिन्होंने ये गाना गाया है. Now I would request Ma'am's Pulses to kindly facilitate her and with the khadaks, and we request Madam दिचन छुस्कित उसके बाद हमारे को एक गाना गा के सुनाएंगी. Hello, hello. हेलो हेलो संभाला जुलाई कोशिश करती हूँ बेस्ट गाने का.
हेलो हेलो मैंने खुद गाया हुआ है तो मैं वो कोशिश करती हूँ अब। शबस ले वॉल्यूम ठीक सा ले ले हेलो हेलो माइक चेक हेलो लेकिन गलसे नोब छकुसना जस्तक अरिये याल जोस्यो दाहनु गार खोदार सी itu ongwe itu ongwe skitelda hoda hanugar khudar ti itu ongwe itu ongwe skitelda लेकिन गिल से नो पूछो कुछ ना Yosla hashi shukupata bento kuzizgati zankya thale thale runga ore josla hashi shukupata bento kuzizgati zankya Dok chu chu mik sil sil ko ngahiyole tes gyani Dok chu chu mik sil sil ko ngahiyole tes gyani Danu gar khudar si itu ongwe itu ongwe skitelda dahanu gar khudar si ha itu ongwe ha itu ongwe skitelda लेकिन गलसे नो पूछो कुछ ना Narguna kushu, jansa tajata anda sosyo. Kapan pes tonto ko ngahi ule desgyani. Tahanu gar khudar si, itu ongwe, itu ongwe skitelda. Oh, dahanu gar khudar si, itu ongwe, itu ongwe skitelda. लेकिन गलसे नो पूछो कुछ ना थैंक यू सर मैं एक हिंदी भी गाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और सॉन्ग गाऊंगी Honorable Justice join another good day. Now to pay Honorable Justice join the judge. This to pay gata ikanetza chibluyan shignata. The dechene chosne pulchenle. O jujule.
इन आँखों के मस्ती के आ, इन आँखों के मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है, इन आँखों से वापसता, इन आँखों से वापसता, अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों के मस्ती के लक्षण apa sa lele अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों के मस्ती के एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में दीवाने हजारों है, दीवाने हजारों है, इन आँखों के मस्ती के, इन आँखों से वापसता, एक सिर्फ हमी में को आँखों से पिलाते हो, आँखों से पिलाते हो, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों है, मैं खाने हजारों है, इन आँखों के मस्ती के। Thank you. Tukje Dechenle, हमारे बीच में मोहम्मद अब्बास, मास्टर मोहम्मद अब्बास के थे जिन्होंने नालसा थीम सॉन्ग हिंदी से पुरिक में ट्रांसलेट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को उनको फेलिसिटेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ से जो नंबरदार आए हैं डिफरेंट गांव से, स्टूडेंट से, अगर आपको नालसा के बारे में, सालसा के बारे में या डालसा के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे डाइस में सारे रिसोर्सफुल पर्सन्स बैठे हुए हैं हमारे बीच में। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। Students from Degree College, Kargil. हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का लैंग्वेज लैटिन लिखे।
आप कुछ भी पूछ सकते हो एडवोकेट एज अ करियर, जुडिशरी के बारे में, जुडिशियल सर्विसेज कैसे, उसकी तैयारी कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है। डीसी साहब यहीं पर ही है, आप लोगों का मांग कि यहाँ पे एक लॉ कॉलेज होना चाहिए। नता इकाने नंबरदार क्योत्यानुला चितों टीवा टीलन जिग्योदना ती आजादले। गुड आफ्टरनून। वुमेन्स राइट के बारे में कुछ बता दे तो। विमेंस राइट, यस सर। ठीक है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी एडवोकेट जरीना बानो जो पैनल लॉयर हैं, टू प्लीज ऑडियंस के बीच में विमेन राइट्स क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यहाँ पे बैठे हुए हमारे डीसी साहब, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। सेशन जज, मैं सेक्रेटरी मैम, सीजेएम सर, हाजी मुर्तज़ा सर, हमारे मुंसिफ द्रास सादक अली सर, एडिशनल एसपी एंड एपीपी, नायब तहसीलदार सर हसनैन मीर, रियाज सर, बार प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट्स एंड ऑल द एडवोकेट्स, पैनल लॉयर, और हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स और हमारे हायर सेकेंडरी की जो गर्ल्स आए हैं, और आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, नंबरदार्स, जो एनसीसी कैडर के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज से जो आए हुए हैं, उनके इंचार्ज प्रोफेसर, इंचार्ज लेक्चरर्स, सबके सामने मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे सवाल दिया, आप बैठ सकते हैं बेटा। एक स्टूडेंट ने एक सवाल दिया कि वुमेन राइट्स के बारे में। वुमेन को भी उतना ही हक है जितना एक मेल को है। आप ये समझ रहे हो कि हमें एक फीमेल होने से ये नहीं है कि हमारा कोई राइट इन्फ्रिंच होता है। ये अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। एवरीवन, यहाँ पे जितने भी आशा वर्कर्स है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है स्पेशली, उनसे मैं बात करती हूँ। हमें राइट टू लिव फ्रीली, ठीक है, ये हमें हक है। फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे साथ अगर कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन लग रहा होगा, अनेक योद को बख्तुन बसयोद, अगर उसको वायलेंस वहाँ पे मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, उसके हस्बैंड से, उनके इन लॉज से हैरेसमेंट छेंजोद ना कर, तो चुप करके ना बैठे। अगर एक बार सहोगे, बार बार सहना पड़ेगा। ये याद रखना। गर्ल्स यहाँ पे जितने भी है, ठीक है, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठा सकते हैं, उतना ही हक है हमें। अंडर डीवी एक्ट के अंदर हम एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे कोर्ट में आप दर्ज कर सकते हो अपने हक के लिए। मेंटली इवन फिजिकली खुद सामिन मर्दूम मचामिन, अगर आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, उसके वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ गलोच छेंज उतना, इवन उसके लिए भी है ये चीज़, ठीक है, डीवी एक्ट से। बाकी दूसरा जो है हमारा है कि हमें जो मेल जो पर्सनालिटी है वो एक अटेंड लाइफ करते हैं, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइफ, उतना हमें भी हक है, एक गर्ल को, एक लेडी को भी हक है कि हम भी वो स्टैंडर्ड, वो राइट वो जो है हमें भी मिले। दूसरा है कि ऑन प्रॉपर्टी, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो मेल के नाम पे ही प्रॉपर्टी लिया जाए या मेल ही प्रॉपर्टी ले। हम औरत अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं। आप अपने माइंड में ये रखो। सबसे पहले ना अति शरीयत में ही, इस्लाम में ही लिखा है 1/3 ज़रिंगाता पता होते हैं। इस्लाम कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 1/3 जो है अपने फादर का जो 1/3 प्रॉपर्टी है वो गर्ल्स का एक राइट बनता है ज़रे, ठीक है, ये राइट है। और राइट टू एजुकेशन सबसे बड़ी बात, राइट टू एजुकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन, फर्स्ट से लेके जो 8 तक तो ये फ्री एजुकेशन बनाया गया है कि फ्री
कोई भी बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाए तो वहाँ पे फ्री एजुकेशन हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 8 तक फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बुक, वहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे अगर एडमिशन के टाइम पे या वहाँ पे जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो स्कूल जो कंसर्न जो स्कूल है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी है, उनको बिल्कुल फुली कोऑपरेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और राइट टू एजुकेशन में ये भी बताया गया है कि जो धूमिंदो स्कूली के फ्रुसा के ज्यादा मामो बिदे वो पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब ये सोच के आप लोग बच्चे लोग आप बोलेंगे कि अच्छी के चढ़ दूँ सिंजू मैडम जू सर दो मिजर, उनको एक अलग से ट्रीट करना है, उनको अलग से रख के उनको हमें कंसिडर करना है कि दमो बस को समझाई बच्चा ये चीज़ें हैं, वो भी इस एक्ट में बताया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस मैंने आपको बताया। और दूसरा, अभी जो BNSS के अंडर जो CRPC को रिप्लेस करके अभी BNSS उसके अंडर 144 औरतें अपना मेंटेनेंस फू अमा छिमी अपो अपी ओदोन लमी स्टेन मेद न कतो दे बोमो सो से कोटें सो से एप्लीकेशन दर्ज बांगें चिन। अगर खो गरीब चियोदना देना इन डालसा, अगर खो गरीब चियोदना डालसा में एप्लीकेशन एक डालना जुंगा पेने वकील ला पेने तमांगें चमेत ना पैनल लॉयर तो जस्चा, और उसके अकॉर्डिंग उसको पैनल लॉयर दिया जाएगा, डालसा के अकॉर्डिंग पैनल लॉयर दिया जाएगा, और वो पैनल लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट उस लेडी के लिए वहाँ पे केस लड़ेगा दुचोशिंदे। क्योंकि ये दुचोंगाता पहला चूँ मत पहला गाती करगिल मेंटेलिटी है पर्टिकुलरली कि अनेन कोट है मैंने खेलबा तक मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ प्लीज़। अनेन कोट है मैंने खेलबा तक जा कोर्ट कचेरी जरूरत प्लीज़ आप आशा वर्कर्स हो, स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के गर्ल्स यहाँ पे जितने भी हैं, वो ये जो मिथ है ना, वो अपने सोसाइटी के आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में ये निकालने की कोशिश करो। बोमो न्योमना ना मन खेल बेक तगंदू देखो इस आने कचेरी असों से आने कोर्ट लसों से जेरे ये जो मेंटेलिटी है तो इंगन में सापो फिंग में कोशिश बस। थैंक यू सो मच। Thank you, Advocate Zarina Lay. Yang Sujia question Yodna. Mohammed. गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे हमारे मैडम ने भी कहा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जेंडर नहीं होगा, ठीक है, ये कहा जाता है। तो जब इन रियलिटी में हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की के बीच में कोई भी अनबन हो या कम्युनिकेशन कुछ हो, झगड़ा हो, तो ज़्यादातर चाहे गलती लड़की की ही क्यों ना हो उसको प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा सुना जाता है सर। चाहे वो इनके जो पुलिस स्टेशन हो कुछ भी हो, जहाँ गई भी उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सुना जाता है चाहे उसकी गलती क्यों ना हो। तो जैसे हम न्यूज़ में भी देखते हैं, सोशल मीडियाज पे भी देखते हैं, इन रियलिटी में मैंने खुद देखा है सर। तो ऐसा क्यों है सर? मतलब CJM साहब देंगे क्वेश्चन। दूसरा माइक है हमारे पास। वही ना। CJM साहब। जी सर। जी, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में इस किस्म से होता है कि लड़कियों के फेवर में ज़्यादा कानून बने हैं। अलबत्ता हमारा जो कानून है, आइन है, वो कहता है कि सारे बराबर हैं। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, सहमति रखता हूँ कि जब हम बोलते हैं एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का इस चीज को देखना का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। मैं नहीं बोलता हूं कि कौन कमजोर है या कौन शक्तिशाली है। एवरीवन इज बॉर्न इक्वल, बट देयर आर सम डिफरेंसेस जो कुदरत ने किया है। राइट्स इंसान एक मर्द और एक औरत में बराबर होना चाहिए, चाहे ये डिसेबल भी क्यों ना हो।
चाहे वो दूसरे एथनिसिटी से क्यों ना हो। लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, सभी को बराबर एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए कुछ कुछ कानून बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, कि कानून खुद एक इस किस्म का इनिशिएटिव ले कि सभी को एक स्तर पे लाए। अब जैसे रिजर्वेशंस है, क्या आप रिजर्वेशन के भी खिलाफ हो? नहीं होंगे आप, क्योंकि आप बोलोगे नहीं, हमारा जो यहाँ पे कंडीशंस है लद्दाख में बाकी जिलों से अलग है। तो क्या हम रिजर्वेशंस ना मांगे ताकि हम भी उन्हीं के लेवल पे जाके उन्हीं के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे जाके कॉम्पीट करें। अब रही बात औरतों की, हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है, इतिहास में आप बोलिए कि औरतों के साथ बराबर वैसे ही सलूक हुआ है जो मर्द के साथ हुआ है। अगर आप अपने दिल में ये बात खुद पूछोगे तो जवाब आपके सामने होगा। कुछ कुछ जो राइट्स हैं, कानूनी हक है, वो औरतों से महरूम रखा गया है। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए औरतों को भी सेम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये कुछ कानून बनाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उसका गलत फायदा उठाएं। और ये सभी को जानना होगा कि जो कानून है वो लोगों की बेनिफिट्स के लिए है। वो एक शील्ड है, वो तलवार नहीं है किसी को मारने के लिए, वो आपका एक प्रोटेक्शन है। अब अगर कोई औरत इसका गलत बेनिफिट उठाता भी है तो अदालत है, एक वहां पे जज बैठते हैं, वकीलें हैं जो आपके दलील अदालत के सामने रखते हैं। तो किसी मर्द के साथ अगर गलत भी होता है तो एक फिल्टर आगे है अदालत जो इसको चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी मर्द हैं वो औरतों का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें। और जो औरत हैं, जो आपके हक में जो कानून है उसको आप जानें, क्योंकि जो कानून है आपके भलाई के लिए है। कोई कानून आपके लिए बना है और आप उस कानून से अनजान हो तो इट इज लाइक जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन विद अ क्लोज पैराशूट। नॉलेज इज पावर। ये जानना जरूरी है आपके हक में क्या क्या कानून है, तभी तो आप इन्हीं का फायदा ले सकते हैं। तो इसलिए जो जो कानून आपके हक में है आप उसके लिए लड़िए। जैसे मुझसे पहले यहाँ पे आए थे एडवोकेट जरीना, उन्होंने कहा कि आप चुप मत रहिए। चुप रहने से क्या होता है, दूसरा जो इंसान है जो आप पे अत्याचार कर रहा है उसका जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है, वो आपको और दबाने लग जाता है। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कानून के सहारे आप किसी के ऊपर जुल्म करें, कानून के सहारे। कानून आपके हक में है, उसका फायदा लें। आप इस कानून से आप अगर जानते हैं तो उसका जो नॉलेज है वो अपने दोस्तों में भी बताएं। जब आप देखते हैं कोई एक जिसकी आवाज ना हो उसके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लिए भी आप मदद करें। तो हम सभी का किसी ना किसी तरीके से जब हम इन कानून से अपने आप को रूबरू कराते हैं, रूबरू होते हैं, तो लोगों का हम फायदा कर सकते हैं। कानून फायदे के लिए है, सभी के, नुकसान के लिए नहीं है। तो मेरी अपील यही रहेगी कि इस किस्म का अगर सोच है कि हाँ सिर्फ औरतों के लिए कानून बन रहा है और इसमें मर्द पिस रहे हैं, तो वो एक सोचना भी गलत है। हाँ, सब कुछ परफेक्शन में नहीं हो सकता है। सब कुछ ये मैथमेटिक्स नहीं है, लाइफ मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4 हो। कहीं ग्रे एरिया रहते हैं, तो उस ग्रे एरिया को आप खुद संभालें, खुद समझें कि एग्जैक्टली आप बोले कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है तो उसके साथ भी वैसा ही हो। सोचिए एक इंसान ने, कोई मुलजिम है, किसी को जान से मार दिया हो, कानून उस जो मरा है इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ जहां पे डैमेज हुआ है उसको सजा देके, कुछ कंपनसेशन देके, इन चीजों को ऐसे किया जा जरूर सकता है। अलबत्ता जो इंसान चले गया है उसको वापस नहीं ला सकता। तो जो ये जिंदगी है और कानून है, कानून जिंदगी को रेगुलेट करने के लिए, नहीं तो हम में और एनिमल्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमें कानून इसलिए दिया गया है ताकि सोसाइटी के जो डीलिंग्स हो, जो सोसाइटी में जो संबंध हो, उसको रेगुलेट कर सकें।
उसको स्मूथली फंक्शन कर सके। जैसे कि एक दवा होता है, वो एक बीमार इंसान के लिए वो एक मलहम होता है, वैसे ही कानून सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तनाजा, उसमें एक मलहम होता है। वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो एक ऑयल है। तो कानून का ये फायदा है। और जब कानून किसी लाचार, नहीं बोलूंगा औरत को, जब किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, उनके लिए जब बन रहा हो इस किस्म से, हमें आगे बढ़ के उन चीजों का अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। मैं ज्यादा आपका और समय नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच। सीजेम साहब, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सीजेम साहब ने अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दिया है। और कोई क्वेश्चन? हमारे बीच में सादिक वजीर साहब हैं, जो न्यूली रिक्रूटेड जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम कारगिल हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने तैयारी कैसे किया था। सादिक साहब, एक सेकंड, लॉर्डशिप ज्वाइन कर दो। सादिक साहब आ सकते हैं तब। अभी शायद ज्वाइन नहीं किया लॉर्डशिप ने, प्लीज सॉरी। ठीक है, वी आर ज्वाइन बाय लॉर्डशिप। नेक्स्ट टाइम। लॉर्डशिप, वेरी गुड आफ्टरनून लॉर्डशिप। Good afternoon. Volume, please raise the volume. Good afternoon, everybody. We're highly honored, Lordship. You're finally joined, Lordship. Yes. So, should I start the address or something else is required to be done before that? We have a felicitation. One last felicitation is left, Lordship, regarding Okay. Dark Victim Compensation Scheme. So we'll give away that check, Lordship. Then you may please continue with your. Oh, okay. Please go ahead. Now I would request the honorable guest on the dais to kindly come forward and present the check regarding the Ladakh Victim Compensation Scheme. Now I would please, मैं request करता हूँ अली हैदर, मरियम बी और उनकी पोती रुबिया को सामने आए और अपना चेक रिसीव करें। Victim assistance to the amount of 8,50,000 has been dispensed by the Ladakh Legal Service Authority under this Ladakh Victim Compensation Scheme.
Next, I would kindly request Honorable Mr. Justice Sanjeev Kumar, Judge, High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, also the Executive Chairman, Ladakh Legal Service Authority, to kindly inaugurate the newly created legal aid clinics. Now, I would kindly request Honorable Mr. Justice Sanjeev Kumar, Executive Chairman, Ladakh Legal Service Authority, to kindly deliver his presidential address. Good afternoon, everybody present there. Extremely sorry for joining late. Actually, all of you know that simultaneously with this program, the Legal Services Day celebrations were going on in Nalsa Supreme Court, New Delhi. So I had to join there. I was just left the program. I'm extremely sorry. I don't know how many of you are still present and how many of you have left. Those who are present, I am grateful to them, and those who have left, they had every reason to leave. This is a sort of formal address on a day which we call as National Legal Services Day. This day is celebrated every day with a view to create an awareness amongst the people that the state has a program and so many schemes under the Legal Services Authority Act 1987 to help the marginalized people to have equal access to justice. Article 14 of the Constitution of India, as many of you know, ensures equality to all citizens, be it in the matter of employment, be it in the matter of having access to justice. But in our country, where most of our population is marginalized, socially and economically backward, such people do not get the full opportunities to have access to justice, and that's why they suffer. They suffer in terms of that they are not provided the requisite justice, that too inexpensive and at the earliest. Article 39A of the Constitution of India, which is contained in Part 4 of the Constitution, was inserted in the Constitution of India by 42nd Amendment in the year 1972. And this provision was aimed at obligating the state to ensure that the legal system promotes justice based upon opportunity, which is equal to all citizens, to provide legal aid to the citizens, which is free and which they are unable to access, because of which they are unable to access due to economic and other disabilities, and also to provide free legal aid through legislation, schemes, and other means, and also to ensure that women, children, and elderly, and the people with the disabilities have full opportunities to take the benefit of the legal system. In consonance with Article 39A and the obligation cast by it, the Parliament enacted Legal Services Authority Act 1987.
And in an annual meeting, when it was brought into force somewhere in the year 1995, in the first annual meeting, which was presided over by the then Chief Justice of India, Justice Anand, a decision was taken to celebrate this day to mark the coming into operation of the Legal Services Authorities Act. And the day emphasizes empowering marginalized communities, highlighting the importance of equal access to justice. The day is seen as a platform to promote legal awareness and ensure access to justice for all citizens, especially those who are socially and economically marginalized. Through various initiatives and programs, this day seeks to empower individuals with knowledge about their legal rights and promote mechanism for conflict resolution to foster a more equitable society. The significance of the day extends beyond mere observance. It raises public awareness about the legal aid schemes and the awareness programs launched by the Legal Services Authority, and also to make them aware as to how to take the benefit of these schemes. The objectives of all these schemes and the creation of legal aid services authorities for all the states and union territories is to ensure that a free legal aid and advice to the deserving people is provided, a proper legal awareness about the government schemes and the rights of the people is debated. Lok Adalat are periodically organized so that the cases are settled with the consent of both the parties without there being any hassle of going for an appeal before the higher forum, so that the litigation comes to end for once for all, and also to promote settlements through alternate dispute resolution mechanism like arbitration and conciliation. There's a very successful scheme which is launched by all the legal services authorities, including ours, that is with regard to the compensation to the victims of crime. This is now a part of the Criminal Procedure Code also, and the new BNSS also. And you have just now seen that some victims of crime have received that interim as well as the final compensation. I have recently taken over as the chairperson of executive chairperson of the authority, and not much aware of the shortfalls which we are required to meet in the coming days. But as per the data which is provided to me, I see that in the previous years, a good work has been done by the Legal Service Authority, Ladakh. We have so far opened up about 22 literary clubs. We have engaged 25 PLVs. We have 9 legal aid clinics established. We are going to establish 5 more legal aid clinics. 3 are ready with us. 2 would be ready soon. I'm told that approval for grant of a mobile van is also given by the government, which is the van which we are likely to get in near future. And if we get that van, you'll see that we'll be able to reach the last man in the line, will take the justice to the doorstep of the needy who deserves it. I know that the Ladakh is a difficult terrain, a difficult area, and access to these areas is must to give effect to the schemes of the parties. I would like to emphasize that the backbone of the legal aid programs and the schemes are PLVs. They make a connect between the authority and the person who's in need of a legal aid. He's a bridge between the government and the last person in the village or in the remote corner of the area who deserves
legal aid. As these persons are really the backbone of the system. They needs to be encouraged. I take this opportunity and having regard to the work which they have done to congratulate all of them for the good work they have done during this year, and also request them to keep up the pace and do still better for the rest of the year, so that we achieve the targets which we are required to achieve, which we are obligated to achieve in the large interest of providing access to justice. I would also like to thank the government of Union Territory of Ladakh. We never face any problem insofar as funds are concerned. We needed some vehicles. I'm told that approval for purchasing 5 vehicles has already been accorded. Whenever we need any financial help for giving effect to the schemes, it is provided by the government. And as a matter of fact, without the assistance of the government, and particularly the financial assistance, it is not possible to carry out. We can lay out the schemes. This could be very beautiful schemes when there's a put on paper, but to implement, we need money, and money comes from the state. And so far as Union Territory of Ladakh is concerned, I have seen the record. I have been informed that there is no such problem. Our recruitment rules are in progress. We will be having proper infrastructure. The people would be engaged soon, so that impetus can be given to the schemes, which for some reasons may not be, maybe languishing for want of infrastructure. And this year's theme of 2024 Legal Services Day is access to justice for all. As a matter of fact, legal services authorities, the basic theme is that we have to provide access to justice to all, but it has to be equal access. So the person who is financially sound and person who is socially and economically backward cannot have the same means of access to the government. So we have been running a very successful program of district legal services, DA. What's this program called? LADC's programs. We know we are short of people in Ladakh, the eligible people. We had to go for relaxation. System does require some improvement at appropriate level. The thought process is going on. But possibly in the coming future, there's some more improvement in the system, and we are able to provide a better legal aid to the people. So far as these legal aid clinics are concerned, these are required to be digitally enabled. Most of our clinics do not have that infrastructure. We don't have the computers. We don't have the internet facility. If anybody from the state is sitting here, I would like to request that you have done a lot for the authority. Please do this small favor so that we reach the people easily, and there's an ease of doing the work, because in that situation we'll be able to connect to the people in the last corner of Ladakh. So we need to digitize all these clinics. A small infrastructure like computer, internet facilities, and other instruments are required. I would request Secretary Legal Services Authority to take up the matter with the government. I'm sure with the kind of response we have been getting from the government, we will get it done also. So let us aim at digitizing all the legal aid clinics by the end of this financial year. Thank you very much for all of you. You waited for me long, but I was genuinely busy. I couldn't make it possible before that. Thank you so much, and have a great Legal Services Day. Happy Legal Services Day to all of you. Thank you, Lordship, for great words of encouragement and also enlightening the participants with your great deliberation. Under the chairmanship of Principal District and Session Judge, who is also the chairman of DLSA, Kargil would strive to achieve the best results in providing legal aid to all the needful people. Now I would request learned CGM Kargil to kindly deliver the vote of thanks.
Honorable Shri Justice Sanjeev Kumar Ji, Judge High Court of Jammu, Kashmir and Ladakh, and Executive Chairman of Ladakh Legal Services Authority, gracing the occasion through virtual mode. Ms. Palzis Angmo, Member Secretary, Ladakh Legal Services Authority, Shri Malik Shabir Ahmed, Principal District and Session Judge, Kargil, Shri Shrikant Bala Sahib Sunse, Deputy Commissioner, Kargil, Learned Advocate Ghulam Murtaza Ji, Shri Shmit Yuryal, Secretary, District Legal Services Authority, Kargil, Shri Nitin Yadav Ji, ASP Kargil, Shri Sadiq Ali Wazir, Munsif Dras, Learned APP Kacho Amil Ji, Shri Hadim Hussain, Councillor, Shri Riaz Ahmed, Bar President Kargil, Shri Kacho Ahmed, Senior Advocate, Learned Advocates of the Bar Kargil, respected students, professors, guests and participants, ladies and gentlemen, a very good morning, Julian Assalamu Alaikum. A very important task has been bestowed upon me by Ladakh Legal Services Authority in extending my gratitude to everyone who has contributed in the success of this program. Therefore, it is my greatest pleasure as Chief Judicial Magistrate, Kargil, to be presenting the vote of thanks in honor of the respected dignitaries. On behalf of Ladakh Legal Services Authority, I extend my sincere gratitude to Honorable Shri Justice Sanjeev Kumar Ji for readily accepting our invitation and gracing this occasion virtually. My Lord has spared his precious time to ensure the success of this program. The guidance and words of Lordship has indeed been very motivating, and I am sure that the participants will be inspired further on to work harder for the benefit of the people. Lordship has always taken keen interest in ensuring that justice is accessible, equally accessible to everyone, especially the marginalized section of the society. With the inauguration of the legal aid clinics today, on National Legal Services Day, legal aid and assistance will be available to even far-flung villages. This also is a step forward towards fulfilling the goal of the Constitution for providing free legal aid to citizens who are unable to access justice due to economic or other disabilities. I also extend my gratitude and thanks to Ms. Palzis Angmo, Member Secretary, Ladakh Legal Services Authority, for her constant contribution and ensuring the success of the program. Ma'am, as a Member Secretary, Ladakh Legal Services Authority has been a driving force in the application of the provision of Ladakh Legal Services Authority Act in Ladakh, ensuring the benefits of the Act reach to all needy persons. Special appreciation and thanks also goes to Shri Malik Shabir Ahmed Ji, Principal District and Session Judge Kargil and Chairman District Legal Services Authority Kargil, Mr. Shmit Yuryal, Secretary District Legal Services Authority Kargil, Ms. Dalda Nango, Chairman TLSC Sanku and Zangskar, Mr. Sadiq Ali Wazir, Chairman TLSC Dras, and the whole team Kargil, DLSA team Kargil, for putting their sincere effort and hard work in making this program a grand success. I also extend my gratitude to the administration Kargil, led by Shri Shrikant Bala Sahib Sunse Ji, Deputy Commissioner Kargil, for their cooperation in the conduct of this program. I thank the team of District Police Kargil for making all the security arrangement and traffic arrangement for smooth functioning of the program. Special thanks to PWD team led by Superintendent Engineer and Executive Engineers in their cooperation for making all the arrangement. I take this opportunity to also thank Advocate Riaz Ahmed, President Bar Kargil, along with all the learned advocates of the Bar Kargil for their constant support. All the staff members of various courts and paralegal volunteers have put in extra effort without which this program would not have been possible. I thank all of them for their unwavering and sincere effort towards making this program a truly successful one. I thank the media team who are present today for their effort in coverage of this program for the benefit of the masses.
Special thanks also goes to the ASHA workers from health department, Anganwadi workers, Nambardas and village members who have spared their valuable time and attended this program. A special mention of thanks also goes to all the professors, the students of Degree College, Kargil, and also all participants who have come all the way from various places to attend this program. I also thank the team for translating the NALSA theme song into local language for the benefit of all. In the end, I thank everyone once again for making this program a grand success, and my apologies to those who I may have missed their name. Thank you very much. Thank you so much for your kind words, Learned CGM Saab. Now we shall all stand for the national anthem. Thank you. Once again, we are thankful to Lordship for sparing Lordship's precious time. With the permission of the Honorable Justice Sanjeev Kumar, we would like to close today's event. Please. Thank you so much, Lordship. स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे आए हैं, रिक्वेस्ट है कि पीछे वाले दरवाजे एग्जिट डोर से जाके रिफ्रेशमेंट करें. वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का सर्विस वहाँ पे रखा हुआ है. All the participants, बाकी प्रोफेसर्स एंड distinguished professors, lecturers, distinguished guests from the district administration, please join us for the high tea in the front lawn. Thank you so much.